Good morning, students. Today we will discuss the class 9 chapter number 2 is matter around us pure objective question important according to the chapter. So let us discuss these questions which have options and we have to mark the correct option out of which of the following statement is are true for the pure substances. इसमें से कौन सी statement सही है pure substances के लिए? Pure substances contain only one kind of particle. बिल्कुल सही है. Pure substance में be compound or mixtures नहीं हो सकते. Okay. That pure substances have the same composition throughout. बिल्कुल सही है. Pure substance की composition जो होती है वो same रहती है क्योंकि वो एक ही काइंड के सब्सटेंस एक ही काइंड के पार्टिकल से बने हैं तो उनकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, तो उनकी कंपोजिशन कैसी रहेगी, सेम रहेगी. प्योर सब्सटेंसेस कैन बी exemplified by all the elements other than nickel. This is wrong. So the answer will be first and third. जहां पे first and third है उसको आपको टिक करना है. That is your B option. Now we are moving to the question number 2. Rusting of an article made up of iron is called. जो रस्टिंग है आर्टिकल की आयरन से बना हुआ, तो आयरन बेटा जब रस्ट होता है तो आयरन वाटर या वाटर वेपर्स हो, ठीक है, या वाटर हो और एयर हो, ठीक है ना, और क्या हो, एयर में ऑक्सीजन. तो ये रस्ट जब होता है, रस्टिंग होती है तो बनता है आपका फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड. तो आप इसको लिख सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक, ओके, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. तो ये है आपका आयरन, ये है आपका वाटर मॉइस्चर बेसिकली, और ये है आपका एयर. इसकी वजह से आपका क्या होता है, रस्ट होता है. तो इन्होंने बोला कि ये रस्ट क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है. दिस इज अ केमिकल रिएक्शन और ये केमिकल चेंज है. तो देखते हैं इनमें क्या ऑप्शन दिए. करोजन एंड इट इज अ फिजिकल, नो इट इज नॉट अ फिजिकल, इट इज अ केमिकल प्रोसेस. दिस सॉल्यूशन एंड अ फिजिकल चेंज, नहीं. डिस सॉल्यूशन, ये किसी आयरन किसी में मिक्स डिसॉल्व नहीं होता, ये गलत बात है. डिस सॉल्यूशन का मतलब डिसॉल्व होना, ऐसा नहीं है. एंड इट इज अ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज नहीं है. करोजन, करोजन सही है, रस्टिंग इज करोजन. एंड इट इज अ केमिकल चेंज, ये सही है. डिस सॉल्यूशन डिसॉल्व नहीं होता एंड इट इज अ केमिकल चेंज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आंसर इज सी. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. So in question number 3, we have to discuss a mixture of sulfur and carbon disulfide. Sulfur means S, carbon disulfide means CS2. Okay, so mixture of sulfur and carbon disulfide, okay, is, बेटा ये जो होता है आपका मिक्सचर कैसा होता है, दे आर आस्किंग फॉर दिस. ओके, सो दिस मिक्सचर इज, ऑलवेज रिमेंबर, इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर. कैसा मिक्सचर होता है ये, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं. तो इसमें हम देखते हैं कि ये कैसा मिक्सचर है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर करेक्ट है, टिंडल इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल सही. होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है लेकिन टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा, दैट इज रॉन्ग. होमोजीनियस मिक्सचर गलत. सो द आंसर इज ए, दैट इट इज अ heterogeneous mixture and it will show Tyndall effect. Heterogeneous mixture always show Tyndall effect, remember this. Okay, now next question number 4. Question number 4 is tincture. Tincture को ध्यान रखना बेटा, tincture is iodine, okay, in alcohol. Okay, so tincture of iodine, an antiseptic property. Okay, the solution is made by dissolving. तो आयोडीन को किसमें डिसॉल्व करके टिंचर बनाते हैं, अल्कोहल में. सो देखते हैं. आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, रॉन्ग. वेस्लिन नो, वाटर नो, आयोडीन इन अल्कोहल. आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व करके टिंचर बनाते हैं एंड दिस इज एन हैविंग एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी. ये मेडिकल स्टोर में भी मिलती है, ओके, एज एन मेडिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following are homogeneous in nature? इनमें से कौन homogeneous है नेचर के अंदर. ओके, सो आइस, ओके, करेक्ट है. वुड नो, ओके, सॉइल नो, एयर नो. एयर हम होमोजीनियस मान रहे हैं बेटा, किसके लिए, सिर्फ डेफिनाइट रीजन के लिए, मतलब एक फिक्स वॉल्यूम के लिए. किसके लिए, फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए.
अगर पूरे इसको हम पूरे अर्थ पे देखें तो एयर इज नॉट होमोजीनियस, बट फॉर योर रूम इन विच राइट नाउ यू आर सिटिंग इट इज होमोजीनियस. Okay, so it is for a reason it is considered as homogeneous. Okay, so here the answer will be where the first and fourth. So this is wrong, this is wrong, so answer is C, that is first and fourth are homogeneous. Now next is question number 6. Which of the following are physical changes? कौन इसमें से physical change है? मेल्टिंग ऑफ आयरन, मेल्ट करना फिजिकल प्रोसेस है, बिल्कुल सही. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल प्रोसेस. बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड फिजिकल है, उसको बेंड कर रहे हैं, उसमें कोई नया चीज नहीं बन रहा. ड्रॉइंग अ फायर, ओके, ड्रॉइंग अ फायर ऑफ आयरन मेटल. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आयरन मेटल पे क्या कर रहे हैं, उसमें गर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. सो इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ओके, सो इट इज ऑल्सो अ chemical process. So जहाँ पे first, third और fourth है, so we have to mark that. So the first, third and fourth is the option number C. Okay. Question number 7. Which of the following are chemical changes? इनमें से कौन सा chemical change है? Okay. Decaying of wood, it is a chemical change, बिल्कुल सही. इसी से आपका कोल बनता है. Okay. For millions of years when the vegetation has been buried inside the earth, okay, under the earth and at high temperature and high pressure. Okay, burning of wood is a chemical process. Okay, then sawing of wood, it is not a chemical process. Then hammering of a nail into a piece of wood is not also a chemical process. जहाँ पे first and second है वो आपका chemical process है, that is the option number A. Now we are moving to the question number 8. Two substances A and B were made to react to form a third substance. जहां पर एक substance A है और एक B है, दोनों react हुए और उन्होंने कोई third substance बना लिया, third substance. Okay, and A to B according to the following. So the third substance is A to B. Following reaction, reaction is also given that 2A plus B is equal to A2 plus A to B. Which of the following statement, okay, concurring दिस रिएक्शन आर इनकरेक्ट? इस रिएक्शन को बताने के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द प्रोडक्ट इज ए टू बी शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी. नो, उसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी ए और बी से. जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी अपने जो जिन चीजों से वो बना है, फ्रॉम दो सब्सटेंस फ्रॉम विच इट इज बीन फॉर्म इज डिफरेंट. सो इट इज नॉट सेम, इट इज नॉट सेम. सो द ए टू बी शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ए एंड बी. Okay, so this property is, this is wrong statement. The product will always have the fixed composition. The product will always have the fixed composition. So fixed composition is correct. मतलब जितने यहाँ पर आपके A होंगे उतने ही और B होंगे उतने ही यहाँ पे A और B होंगे. Okay, because it is a balance equation. तो composition इसकी fixed रहेगी. जैसे कि A यहाँ पे 2 है और B 1 है, तो इसका ratio हमेशा composition by mass and by number of atom will always remain same. The product so formed cannot be classified as a compound. नहीं, ये तो कंपाउंड है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई. ये तो कंपाउंड है क्योंकि दो चीजें मिलके, दो सब्सटेंस मिलके जब एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो वो एक कंपाउंड होगा ही. द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट, वो एलिमेंट नहीं होगा, वो कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल बोलेंगे उसे. सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो दे आर आस्किंग फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इनकरेक्ट कौन सी है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. तो जहां पे देखिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो, this is not first, third and fourth, not first, third and fourth, this is this answer number C will be your correct answer. So now we are moving to the question number 9. So in the question number 9, here it has been given that two chemical species X and Y combine together to form product P. दो केमिकल हैं X और Y, वो रिएक्ट हुए और उन्होंने बनाया P. Combine to form together to form a product P which contain both X and Y, जिसके अंदर X and Y है. X and Y cannot be broken down into simpler substances by simple chemical reaction. X और Y को हम कोई other further substances में नहीं तोड़ सकते. Means which of the following concerning, okay, which of the following concerning, okay, product P, which of the following concerning 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 product P, which of the
दी स्पीशीज एक्स वाई एंड पी आर करेक्ट। बेटा अगर एक्स और वाई को हम सिंपल केमिकल रिएक्शन से किसी फर्दर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे एलिमेंट्स होंगे। तो एक्स एंड वाई हमारे एलिमेंट्स होंगे, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए। एंड पी हमारा कंपाउंड होगा, पी हमारा क्या होगा, कंपाउंड। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पी इज अ कंपाउंड, करेक्ट है। एक्स एंड वाई आर कंपाउंड, नो, बिकॉज ये केमिकल रिएक्शन से फर्दर सब्सटेंस में नहीं टूट रहे हैं। एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स, दैट इज करेक्ट। पी हैज अ फिक्स प्रोपोर्शन, ये बात भी सही है क्योंकि वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन का ही होगा। सो द आंसर विल बी वन, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज the option number D is your correct answer. Now we are moving towards the question number 10. So in question number 10 it has been given, suggest separation techniques one would need to employ to separate the following mixture. इनको सेपरेट करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? मर्करी एंड वाटर। So mercury and water, they have different densities. Okay, so they are can be separated by simple separating funnel, or you can say decantation. Okay, so they can be separated by decantation or separating funnel. Yes Chandra? Sir, they can be separated by both techniques, descendation and separating funnel. क्या बेटा? सर वो दोनों के कहते हैं, सर सेपरेटिंग फनल और डिकंडेशन से दोनों से सेपरेट हो सकते हैं। Yes, is it okay? Yes, it can be Okay, sir. separated. Next, second, potassium chloride means KCl. Okay, over here is mercury, that is Hg, and water, that is H2O. Okay, here potassium chloride and ammonium chloride. Ammonium chloride is NH4Cl. Now the formulas you don't have to remember right now, but in the next class, means next chapter, you have to learn those formulas. Okay, and you are able to create them also. Potassium chloride and ammonium chloride. So ammonium chloride having a property of sublimation. So they can be separated with the process of sublimation. Common salt, water and sand. Common salt, water and sand. Sand can be separated by filtration with common salt and water. Then further, after filtration, common salt and water can be separated by evaporation, or you can say distillation. Okay. So first of all, sand is being removed by the help of filtration. Then common salt and water, they have been separated by your evaporation or distillation. Yes Chandra? सर क्रिस्टलाइजेशन से नहीं हो सकता? Beta, crystallization, it is a miscible and it is highly miscible, and from the large amount of water, how you can separate the common salt through crystallization? It will cost you very high. It will cost you very high. Okay. Now next is kerosene, oil, water and salt. So kerosene, oil, water and salt. Water and salt are miscible. So first of all, kerosene can be replaced with the help of separating funnel. Then water and salt again with the help of evaporation. Okay. So this has been written over here. So let us see the diagram for them. Okay. So decantation over here, the separating funnel is being shown to you. Okay. So on the basis of the density, we can separate out. So water is having low density. Water density is lesser than the density of mercury. Okay. That is why mercury is separated first with the help of separating funnel, and then the water is left behind. Okay. Next, is potassium okay, chloride and ammonium chloride are separated with the help of sublimation, because ammonium chloride can be easily converted into from solid to the gas, and then these gas particles have been deposited on the cold part, okay, the cool part of the funnel, and separated from the potassium chloride which is left behind. Okay, which is left behind. Next is
separation of sand, what, okay, salt and sand and water mixture. So first of all, we do the filtration. Okay, so filtration will separate out your sand, and then we will do the evaporation. So to separate out the water, as water is volatile, so it will move out and the salt is left behind. Salt is left behind. Then separation of salt dissolved in water, then it is directly through the evaporation. If we heat the mixture of salt and water, the water is volatile and it will evaporate. Okay, it will convert into the vapors and this salt will left behind. Then next is kerosene is separated. Again, kerosene is having a density lesser than the water, so it will be floating on the water. So water is first get out from the separating funnel and the kerosene is left behind. Now next question is, there are two tubes which have been given to us in figure 2.1. This is the figure 2.1. There are two tubes which have been given, A and B. Okay, so A and B are the two tubes. Will be more effective as a condenser. So we know that these are beads. These are beads, which are the glass balls which have the surface area to cool the, to condense the thing. So they have been used also in fractional distillation. Okay, these are also used in the fractional distillation. So therefore they have the more capability of condensing. So the A will be your correct answer to condense. So beads in tube A provide the increased surface area for the cooling of the vapors that comes in contact with them. Hence, they are the good condensers. They are the good condensers. Okay. So now the next question is question number 12. Salt can be recovered from its solution by evaporation. That is correct. Suggest one more technique for the same. So as Chandra also said, crystallization, but it will be costlier. Okay, salt can also be covered, okay, recovered from its solution by crystallization. Crystallization is more efficient process to remove the soluble impurities, which cannot be done by evaporation, but it is costly. It is costly, so it is not cost effective. Now next, the seawater can be classified as an homogeneous as well as heterogeneous mixture. Comment. It is considered as the seawater. Okay, we can consider the seawater on the surface. It comprises water and salt, and it is homogeneous mixture. जो surface पे sea water होता है वो homogeneous होता है, उसके अंदर सिर्फ water and salt होता है. But we consider the sea water deep sea. It consists of salt, water, and mud, decayed plants, etc., which will be heterogeneous mixture. So generally we can directly say that the sea water is heterogeneous because the impurities will also float. Okay, yes Chandra. Sir, what are homogeneous and heterogeneous mixtures? The water is heterogeneous. Water, basically pure water, is homogeneous, but whenever the impurity is mixed, okay, if the impurity, now it depends upon the impurity, which impurity is there. If you mix salt, then the salt and water mixture, okay, salt and water mixture, that is solution, is homogeneous. But if you mix some other things which are heterogeneous in nature, then you can't say it is homogeneous. It's depend upon the So type of mixture. homogeneous में composition same होता है ना? Homogeneous, the density will remain same throughout the solution. और heterogeneous में नहीं होगा? No, it will not remain same. Okay. Now question number 14. While diluting मतलब होता है पतला करना, पानी ज्यादा मिलाना. Okay, adding more water. So while diluting a solution of salt in water, a student by mistake add acetone. उसने acetone add कर दिया जिसका boiling point था 56 degree Celsius. What technique can be employed to get back the acetone? Acetone को वापस लाने के लिए वो क्या technique use कर सकता है? Okay, so he can use fractional distillation. Okay, can be used to separate out the acetone from the mixture of salt and water. Okay, so there are considerable difference in the boiling point of acetone and water. When the solution is heated, acetone vapors, okay, vaporize first, and the water is collected in the distillation flask. The vapors of the acetones are then condensed to obtain the acetone. Beta, it can use either distillation directly or fractional distillation.
because the boiling point difference is more than 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही करना पड़ता. क्वेश्चन नंबर 15. What would you observe when a saturated solution of potassium chloride KCl prepared at 60 degrees Celsius is allowed to cool? ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हमने किसका, पोटेशियम क्लोराइड का, और उसको कूल किया कहां तक पर, रूम टेम्परेचर तक. सो बेटा उसमें क्या होगा, क्रिस्टल्स बनने लगेंगे. सो दिस सोडियम पोटेशियम, ओके, पोटेशियम क्लोराइड विल सेपरेट आउट. ओके, पोटेशियम क्लोराइड separate out from the saturated solution when the temperature of the solution reduced from 60 degree Celsius to room temperature. Room temperature is around 25 degrees Celsius. The solubility of the solid state is affected by the change in temperature, because why, crystallization is formed, crystals are formed, that is crystallization take place. Okay, because it is a saturated solution. Second, an aqueous solution of sugar solution is heated, okay, to dryness. एक एक्वस सॉल्यूशन था शुगर इन वाटर का, उसको हमने हीट किया, तब तक वो ड्राई नहीं हो गया, तो पीछे क्या रह जाएगा, वाटर गेट इवेपोरेट. ओके, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज हीटेड फर्स्ट, water get evaporated up to some extent, then the sugar get charged. That means the sugar is C6H12O6. Okay, now when we heat it strongly, it will convert into black carbon massy substance, that is carbon, and the water are being completely evaporated. The water molecules have been moved out from the sugar. Okay, from the sugar. Next, a mixture of iron fillings and sulfur powder is heated strongly. Iron fillings and sulfur powder. So when they have been heated, iron, okay, iron heated with sulfur, then a chemical reaction take place for the formation of iron sulfide. Iron sulfide. Iron sulfide बन जाता है जब आयरन और सल्फर हीट होते हैं स्ट्रांगली, तो आयरन सल्फाइड बनता है. आयरन सल्फाइड, the formula is FeS. The iron sulfide formula is FeS. Okay, so now we will discuss the 16th question. Explain why particles of the colloid solution do not settle down when they left undisturbed. जैसे कि मिल्क है, मिल्क एक कॉलॉइड सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं जब उसको मिल्क को हम काफी समय के लिए एक जगह रख देते हैं. while in case of suspension they do so. जैसे कि सैंड को या सॉइल को पानी में मिलाते हैं तो वो कुछ समय अगर उसको रख देते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है. ऐसा क्यों होता है? ओके, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन इज रिलेटिवली लार्जर देन द साइज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन. व्हाई? सस्पेंशन पार्टिकल्स का जो साइज होता है बेटा, दैट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, और जो कोलॉइड होते हैं उनका साइज होता है ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर but less than 100 nanometer for the colloids, and for the suspension it is greater than 100 nanometer. Okay, so moreover in suspension molecular interaction is weaker to keep the molecules in suspended form. दूसरा, suspended particles के बीच में क्या होता है, जो molecular force होती है एक particle के से दूसरे particle के बीच में molecules में, वो कम होती है. Hence the particles settle down. Similarly, in the colloid solution, molecular interaction is strong, hence they remain suspended. तो एक तो size की वजह से बेटा they are not so heavier, so they are not settled down, and the force of attraction between the particles are stronger, so that makes them floating or suspended. Okay. The last question is question number 17. We will discuss. 1 minute. So question number 17 is, smoke and fog both are aerosols, in which way they are differ. तो smoke और fog जो है दोनों aerosol हैं, तो उन दोनों में difference क्या है? Both smoke and fog are gas, okay, have gas as dispersed medium, continuous phase. Gas जो है इनमें dispersed medium है, but the difference lies in the dispersed phase. Dispersed phase of fog is liquid. The dispersed phase of fog is liquid, whereas in smoke it is solid, that is particulate matter. So these are the important questions for chapter number 2 of class 9. Okay, so